Hello everyone, welcome to IT Tools for Business. Now today I am going to start another function category, that is date and time function. Now in date and time function, the first function is now function. So what is the use of now function? Now function can be used to get the current date and time values that is displayed in your computer, and it is useful when you want to update the time whenever someone open a worksheet or when one calculation is dependent on current time, then it is used. Now it represent or it return a date, and that represent a current date, and as well as it also return time, right? For example, here syntax is now, so now function does not take any input argument and it is used with empty parenthesis. Fine. Now साथ में हम दूसरा फंक्शन भी सीख लेते हैं, that is today. Today function can be used to get the current date, that is same as now, but now में time display होगा, today में time display नहीं होगा, right? So it return the current date also, but as now today function does not take any argument and it is used with empty parenthesis. Syntax is like that, today. Now let me explain this. For example, if I write equal to now, then it will display today's date with time. But if I write function today without parenthesis, then it will display only date, today's date, or we can say current date. Okay. Now next function is date function. Now date function can be used when you want to get the date value using the year, month and day value as the input argument. Like here in syntax, you have to pass year, month and day. So these year, month and day will convert into a particular date. For example, equal to date, in that first you have to pass year, like if I pass 2019, then month December, so I write 12, and day, for example, 1. So it will display date like 1st 12 2019. Fine. Now next one is day. Now it return a value. This function return a value between 0 to 31, that is month day, and that depending on the date used as input. So you have to take one date as input and it will find the particular date जो है वो डिस्प्ले करेगा. लाइक फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 0 to 29. सो इट विल डिस्प्ले 0 to 29 में से कोई भी एक डे डिस्प्ले करेगा. लाइक इफ आई राइट डे इक्वल टू डे. नाउ फॉर एग्जाम्पल जो अभी ये डेट मैंने लिखी है वही हम एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो उसमें से हमें डे मिलेगा. कौन सा डे है? 1. नाउ फॉर एग्जाम्पल सेम दूसरी डेट 29 पे हम देंगे, तो कौन सा डे आएगा? 29. फाइन. होप यू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन. नाउ next function is days 360. Now this function return the number of days between two dates, right? So we have to insert two date, that is start date and end date. So हमें return क्या होगा? Total number of days between these two date, right? And the third option in these 360 days in this function is method. Method is optional, no need to write if not require it. The type of day count basis to use default US method और European method हम change कर सकते हैं. Now for example यहाँ पे to date है, like days
360, first date is this one, comma second days is this one, ठीक है। बिटवीन कितने डेज होंगे वो हमें फाइंड करना है, सो -480, ओके, क्योंकि हमने डेट जो है वो चेंज करना है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट डेट ये देनी है एंड सेकंड डेट दिस वन, सो कितने हैं 418 डेज है in between these two dates, right? Now third one is time. Now time function returns a numeric value as a time in HH, mm, ss format. Like hour, minute and second format में हमें time represent करेगा, लेकिन हमें time bracket में देना है, like हमने लिखा time hour, for example 7 o'clock and 30 minute and 45 second, तो वो रिप्रेजेंट करेगा टाइम में लाइक दिस 7:30 AM, राइट। हमने AM PM मेंशन नहीं किया, लेकिन 7 है तो उसने AM कंसिडर कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई राइट 13 देन इट विल कंसिडर एट 1 PM, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर फंक्शन. Our function can be used when you want to get an hour integer value from a specific time value. वो पर्टिकुलर डेट में से hour रिटर्न करेगा, ठीक है, लाइक इक्वल टू hour, और अगर मैंने ये डेट दी इनपुट देन इट विल रिटर्न 20, क्योंकि 20 hour है, राइट। देन मिनट भी ऐसे ही करेगा, वो डेट दी उसमें से मिनट एक्सट्रैक्ट करेगा, और सेकंड फंक्शन क्या करेगा उसमें से सेकंड एक्सट्रैक्ट करेगा। मंथ फंक्शन क्या करेगा, जो हमने डेट स्पेसिफाई की है उसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा। ईयर फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड वीक डे जो है वो पर्टिकुलर डेट में से पर्टिकुलर डे रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ़ 1 देन संडे, 2 देन मंडे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हियर वी फंक्शन जो डेट फंक्शन है हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो देन यू कैन टेल मी। थैंक यू।